Hello, good morning, welcome guys. This is Tajinder once again with you. As you all know, used to make a video about Schengen countries, about the Europe, how you can apply for Europe, what are the things, what are the jobs you can apply for, what are the possibility of the work permit. So today once again I will make a video. So today's topic it's gonna be how to fill the Schengen Type D form, because basically I'm getting a lot of queries related to the Schengen form, like how to fill it, how basic query which I'm getting on daily basis. It's how to fill it, from where to download it, and there's a number of categories, how to categorize and how to fill it. So today I decided to make a video upon this blog. So today we will discuss about the whole form, how to download it and how to fill it, or do we have to fill it manually, or by we can type it, or we can write it down upon the on the form. So let's go guys, we will start this blog. Yeah. तो गाइस ये वाला फॉर्म है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। इसमें ये तीन पेजेस का फॉर्म है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। ऑलराइट, so the first phase of the form is like a very basic. You have to write it down, your surname or the last name, and then the middle name or the family name, it's optional. Alright, then the first name on the third, the fourth your date of birth, fifth is gonna be your place of birth as per your passport. Try to look on your passport, accordingly fill it. Then country of the birth, आपका birth कहाँ हुआ था, the place where you born. Then the current nationality. Alright, साथ it's gonna be nationality at the birth. It's gonna be the same unless you have a dual nationality. Then other nationality is optional, like if you have then you can do it, unless you don't have dual. So the eighth, it's gonna be your sex, like male or female. Then civil status, like you are single, married, divorcee, or whatever it's gonna be. So mostly viewers are getting difficulty in the 10th. इसमें बेसिकली अगर आप माइनर नहीं है, अगर आपका कोई गार्डियन है तो उसका डिटेल आएगा। बेसिकली अगर कोई वर्क परमिट के लिए जा रहा है, विजिट वीज़ा पे जा रहा है, ऑफ कोर्स वो माइनर ही होगा। तो ऑलराइट, इसकी ज़रूरत नहीं है फिल करने की, सो यू कैन लीव इट एम्प्टी। 11th में आएगा आपका आईडी कार्ड नंबर। ऑलराइट, अगर आप इंडिया से है, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट नंबर भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप ट्रैवल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो। अगर आप इंडियन हैं तो ऑफ कोर्स आप पासपोर्ट ही यूज़ करेंगे। तो सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है मोस्टली। बाकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स या फिर स्पेशल कैटेगरी जॉब्स के लिए होता है। ऑलराइट, आप फिर 13 पे आएगा आपका नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। बेसिकली पासपोर्ट ही आएगा, पासपोर्ट नंबर आएगा उसमें। पासपोर्ट का 14 में आएगा डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू जो है 15 में उसकी एक्सपायरी डेट आएगी। 16 में कौन सी कंट्री में इशू हुआ है आपका पासपोर्ट, और ऑलराइट, और 17 नंबर है आपका अगर कोई EU कंट्री में आपका कोई रिलेटिव है। ऑलराइट, अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन लीव इट ब्लैंक। So 18 it's gonna be connected to the 17. So अगर आप 17 में कुछ फिल करते हैं तो 18 में भी फिल करना पड़ेगा। अगर आप 17 में कोई डिटेल डालते हैं किसी का जो ये कंट्री में है, तो 18 में आपको बताना पड़ेगा उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, मतलब आपका क्या रिलेशन है उसके साथ। ऑलराइट, 19 में आएगा आपका एड्रेस जो फिल कर रहा है फॉर्म। ऑलराइट, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आएगा उसके बाद में, और उसके बाद में आएगा अगर जो 20th है उसमें आएगा बेसिकली इफ़ यू आर इंडियन रेजिडेंट, और आप बेसिकली किसी और कंट्री में रहकर उधर से अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली मोस्टली लाइक पीपल फ्रॉम गल्फ और पीपल फ्रॉम सऊदी और some other country they are applying it.
वो अपनी कंट्री में नहीं होते हुए किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं. बेसिकली आप इंडियन हो बट आप दुबई में काम कर रहे हो और दुबई से अप्लाई कर रहे हो, तो दुबई का जो एमएस आईडी होता है आपको वो फॉर्म वो नंबर आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा. ऑल राइट. तो उसकी एक्सपायरी डेट और उसका नंबर, और 21 में आपका आप क्या काम करते हैं. ओके, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, that's what you have to write it down. Then employer and employer address. Okay, basically उसके बाद 22nd में आएगा आपका एम्प्लॉयर है, उसका नाम आएगा, एड्रेस आएगा और टेलीफोन नंबर आएगा. ऑलराइट. फॉर स्टूडेंट आपके कॉलेज का डिटेल आएगा और ईमेल और जो भी कंसर्न पर्सन है उसका डिटेल आएगा. ऑलराइट. और 23rd में आएगा आपका पर्पस ऑफ विजिट. अगर विजिट वीज़ा है तो ट्रैवल टूरिज्म आएगा, और वर्क परमिट है तो इट्स नॉट मेंशन देयर, सो यू कैन टेक अदर्स एंड यू कैन राइट इट डाउन. ऑलराइट. 24th एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे. आपका पर्पस क्या है जाने का, बेसिकली 23rd के साथ कनेक्टेड है. अगर आप वहाँ ट्रैवल लिख रहे हो, टूरिज्म लिख रहे हो, तो आपका ट्रैवल पर्पस होगा. अगर आप वर्क परमिट ले जा रहे हो तो यू नो एम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट. अगर 25th मेंबर स्टेट ऑफ द मेन डेस्टिनेशन. अगर मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ. बेसिकली आपका मेन डेस्टिनेशन कौन है यूरोप, कौन सा है यूरोप में. सपोज आप फ्रांस जा रहे हो बट यू आर गोइंग फ्रांस बाय जर्मन और ग्रीस और सम अदर कंट्री. सो बेसिकली आपको यहाँ फ्रांस ही डालना है, क्योंकि आप फ्रांस में जाके स्टे करोगे. उससे पहले आपका स्टे होगा किसी और कंट्री में, या फिर पहले आप माल्टा जा रहे हो, 2 दिन रह रहे हो, उसके बाद आप फ्रांस जा रहे हो, तो मेन डेस्टिनेशन आपका फ्रांस ही होगा. ऑलराइट. सो 22nd में आएगा नंबर ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड. वर्क परमिट हो तो सिंगल एंट्री होगा. अगर टूरिस्ट वीज़ा भी है तो वो भी सिंगल एंट्री ही रहेगा. 22nd intended date of arrival of the first intended stay in the Schengen area. So here you will mention the day when you are going to arrive there. Alright. So the particular date. Intended stay of departure from the Schengen area for the first time. Alright. 22nd का जो second part है उसका आप लीव भी छोड़ भी सकते हो अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो. If you're on tourist visa, you can write it down the departure date from Schengen area. Alright. 28th, fingerprint collected previously for the purpose of applying for the Schengen visa. Okay, 28th is gonna be a little tricky. Basically, they are asking if you have already given your biometric for the Schengen area, Schengen visa. If you earlier apply for Schengen area, of course you could give it. So if you give it, you have to mention it here yes, then you have to write it on the date. So yes. So 29th and second part of 29th you can leave it blank. If you're going for work month, there's no use to write it on everything like that. Alright. Furthermore, so we reach the third phase of the page form. So we start with the 30th. So address and the email address of the inviting person, hotel or temporary accommodation. So here you have to mention your employer's detail, or either if you book it your hotel or someone else is providing you a temporary accommodation. Like some people are booking hotel, or some of them are booking hostels, or maybe your employer are giving you temporary accommodation for a few days to look for your permanent address or permanent accommodation. So you have to mention there. All right. And you have to mention their contact number and name, as well as the address of the person who's providing you accommodation. And 31st, surname, first name, address, telephone number and email address of the contact person from the company. So where you're going to get employment, the company name, the person who gonna be a contact person from the company, email address and the contact number. So you have to mention everything there. On 32nd you have to mention like who is going to take the responsibility of your whole expense over the trip. So you have to mention it by yourself or your employee. If you have to mention it like employee, then you have to mention it why. Or if you are mostly
the case is like you are the one who is going to take care of your whole expense, then you have to take the first one. Then you have to mention like you are going to carry cash or you have card detail, so accordingly you have to take it. So here we go, we are on the last phase. Here you have to write it down, the place and the date, then you have to sign. Alright, so अगर आप कोई गार्डियन आपका फिल कर रहा है तो उसके सिग्नेचर आएंगे, अदरवाइज़ आपके सिग्नेचर आएंगे या फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर आएंगे. तो गाइस ये था शेंगन फॉर्म कैसे फिल करते हैं. तो बेसिकली यू हैव ऑल द स्टेप्स हाउ टू फिल इट. सो इन एडवांस आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ. तो डू कमेंट्स, write it down if you have any query. So I'll just try to give you reply as much as I can. So best of luck guys. Do like and share with your friends so they can get the information about it, so they will not get called by any agents. So yes guys, best of luck. See you in the next video. Bye bye, take care.